अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS304 के फाइनल टाइम रिलेटेड MCQs को। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड MCQs होंगे। इसमें हम सारे के सारे MCQs चेक करेंगे जो ओल्ड पेपर्स में आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोशिश करूँगी डायरेक्ट आंसर बताऊँ। कहीं कहीं मैं आपको इसके ऑप्शंस भी बता दूंगी, बट ज़्यादा हम डायरेक्ट आंसर्स की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज रन टाइम बाइंडिंग, डिक्लेयरिंग ओवररिडन मेथड एज नॉन virtual. Which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on a different data type, that is called templates? A copy constructor is invoked when an argument is passed by value. फिर से हमसे पूछ रहे हैं कि जी like template function, a class template may not handle all the types successfully. यानी कि जैसे टेम्पलेट फंक्शन हर टाइप को सक्सेसफुली हैंडल कर सकता है, तो क्या क्लास टेम्पलेट भी कर सकता है या नहीं कर सकता? तो आपका आंसर होगा कि नहीं कर सकता, ट्रू। यानी कि टेम्पलेट फंक्शन की तरह क्लास टेम्पलेट भी हर टाइप को हैंडल नहीं कर सकता। फिर हमारे पास है जी अगला क्वेश्चन, अ क्लास टेम्पलेट में इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास टेम्पलेट, दैट इज ट्रू। बाय डिफॉल्ट द वेक्टर वैल्यू या वेक्टर डेटा आइटम आर इनिशियलाइज्ड टू 0 इन प्राइवेट डैश only member function and friend classes or functions of derived class can convert pointer or a reference of derived object to that parent object. ऑप्शन है जी इसके स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, कंपोजिशन। इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द गिवन। अब जेनेरिक प्रोग्रामिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। यानी कि वो रीयूज भी कर सकते हैं, उसे राइट भी किया जा सकता है और उसे मेंटेन भी किया जा सकता है। टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शन। ऑप्शन से जी ग्रेटर मेमोरी, लेसर मेमोरी, इक्वल मेमोरी और नन ऑफ द गिवन। तो इसका आंसर होगा जी लेसर मेमोरी। Non-template friend functions of a class are friend of dash instance of that class. तो याद रखिए यहाँ पे all है, ये all गलत है। यहाँ पे है जी all instance of one data type, कि हर इंस्टेंस के किसी भी एक डेटा टाइप को नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शंस इन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास यानी कि कर दे काम करते हैं उसके साथ। A copy constructor is invoked when an argument is passed by value. A pointer to a base class can point to object of derived class, that is true. A template argument is precise by the keyword class. Which one of the following term must relate to polymorphism? Dynamic binding. Multiple inheritance can be of type all of the given. क्या क्या करता है जी मल्टीपल इनहेरिटेंस? पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है और प्रोटेक्टेड भी होती है। Assume a class derive that is privately derived from a class base, sorry class derv है ये, class derv that is privately derived from a class base. An object of class derv located in a main can access, क्या एक्सेस करेगा जी? पब्लिक मेंबर ऑफ derv। ये पब्लिक हमें बताएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड बाय, ये रिपीट हुआ है जी, एन आर्गुमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू। अ फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम इन वर्चुअल मेंबर फंक्शन। याद रखें वर्चुअल मेंबर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग रन टाइम। टू इम्पॉर्टेंट STL एसोसिएटिव कंटेनर आर, अब कौन कौन से STL एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं? सेट and map. Set and map. An abstract class is useful when we do not want to instantiate its objects.
अब पूछा जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज़फुल नहीं होती। तो हम लोग जब लिखेंगे कि हम किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। दोबारा रिपीट में आ गया जी ऑल ऑफ द गिवन, बट डिफॉल्ट ये भी रिपीट में आ रहा है। डेटा आइटम आर इनिशियलाइज्ड टू 0। Suppose you create an uninitialized vector as follow। ये वेक्टर बना है। The following statement, अब इसके बताया है कि क्या हुआ है। वेक्टर int evec यानी कि evac after adding the statement evac dot push back 20 what will happen। अब पूछ रहे हैं जी इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब होता है कि एक एलिमेंट को हमने ऐड किया, जिसे हमने एंड पर ऐड किया, यानी कि वो एविक था, और इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू ऑफ 21। अब तो इससे हम इंग्लिश में करेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल ऐड एन एलिमेंट टू द एंड द बैक ऑफ एविक एंड इनिशियलाइज इट विद द वैल्यू 21। Default constructor is such constructor which either has no dash or it has some parameter these have dash values। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, और अगर पैरामीटर हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। Which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on different data type। कि दोबारा हमारे पास रिपीट में आया जी कि टेम्पलेट इसका आंसर आता है। Describe the way to declare a template class as a friend of any class। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था। Class is like two-dimensional shape and three-dimensional shape would normally be concrete, while class like sphere and cube would normally be abstract। It's a true। देखिए जो क्लासेस होती हैं जिनकी शेप हमारे पास 2 डायमेंशन आती है या 3 डायमेंशन, तो हम उन्हें कंक्रीट क्लासेस कहते हैं। हाँ, और उसके बनस्पत जिनकी क्लासेस की हमारे पास शेप स्फेयर आ जाएगी या क्यूब की शक्ल में आएंगे तो हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। In order to define a class template, the first line of definition must be template यानी type name T। अब देख लें जी, टेम्पलेट पहले आएगा, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर टाइप नेम लिखेंगे, फिर कैपिटल टी और ख़त्म। In case of multiple inheritance, a derived class inherits both public data member or member function of its all basis classes। In private dash, ये दोबारा हमारे पास रिपीट आ गया जी। Only member function and friend function or function of a derived class can convert pointer to reference of derived object to the parent object। तो हम कहेंगे जी in private inheritance। अगेन हमारे पास ये रिपीट में आ गया, तो हम इसे कर ही लेते हैं। चले, which of the following is the best approach if it is required to have much more than one function having exactly same functionality and implemented on a different data type? That is template। ये template होती है। A template argument is preceded by the keyword class। Which of the following causes runtime binding? तो हम कौन सा लेंगे जी? Declaring overridden method as a non-virtual। A function template cannot be overloaded by another function template। तो is it true or false? Is it true? Which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on a different data type? That is template। Identify the correct way of declaring an object of a user-defined template class A for char type member। तो हम इसका आंसर लिखेंगे A char object। The user must define the operation of the copy constructor। Is it true or false? Is it true? यूज़र को हर हालत में बताना होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या ऑपरेशन है। टेम्पलेट फंक्शंस यूज, ये दोबारा हमारे पास रिपीट में आ गया जी। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट या फंक्शन, तो हम कहेंगे लेसर मेमोरी यानी लेसर मेमोरी। द फाइंड एल्गोरिथम टेक्स एट इटरेशन एज इट फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स। कंपाइलर परफॉर्म डैश टाइप चेकिंग टू डायग्नोस टाइप एरर। क्या चीज़ चेकिंग करेगा जी? स्टैटिक
चेकिंग स्टार्ट करेगा. Which of the following is or are advantages of generic programming? ये हमारे पास दोबारा रिपीट में आ गई थी ये चीज़ के रीयूजबिलिटी राइटेबिलिटी. आप लोग देखें कितने इंपॉर्टेंट है ये. अब 2010 के भी हम चल रहे हैं तो वहाँ पर भी यही आ रहा है. वेक्टर कंटेन कॉन्टिजीनियस एलिमेंट स्टोर्ड इज एज एन एरे. सॉरी contiguous था. Contiguous element. Vector contain contiguous element stored as array. Suppose you create an uninitialized vector as follow. तो ये दोबारा मेरे पास रिपीट में आ गया जी. हमने एंड पर आकर एक एलिमेंट को एंटर किया है जो कि एवेक की जगह पर हमने इनिशलाइज किया, उसे एक वैल्यू हमने दे दी है 21. इन डी क्यू डेटा कैन बी. डी क्यू में क्या होता है? डेटा इंसर्ट किया जाता है और डिलीट किया जाता है किसी भी आर्बिट्रेरी लोकेशन में. बट द प्रोसेस इज रिलेटिवली स्लो. बट ये प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता होता है. algorithm कैन ओनली बी implemented यूजिंग STL कंटेनर. इज इट फॉल्स और ट्रू? इट्स अ फॉल्स. व्हाट इज क्लास? अ क्लास क्या चीज़ है? अ क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट. ये डिस्क्रिप्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की. Inheritance is a way of add feature to existing classes without rewriting them. We can use this pointer in the constructor, in the body, and even in the initialization list of any class if we were careful. Is it true or is it false? Is it true? Dash and dash method may not be declared abstract. मैंने आपको बताया था ऊपर, फिर दोबारा इसमें रिपीट होकर आ गया जी. प्राइवेट एंड स्टैटिक मेंबर्स या मेथड्स में नॉट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट. डिफ़ॉल्ट constructor is such constructor which either has no dash or if it has some parameters, these have dash values. रिपीट में हमारे पास आया है जी. A default constructor is such a constructor which either has no parameters or if it has some parameters, these have default values. अगला हमारे पास MCQs है जी. Public methods of base class can dash be accessed in the inits derived class directly. The type that is used to declare a references or a pointer is called its static type. Dash members are somewhere between public and private members. They are used in inheritance. कौन से members होंगे जी? Protected members. Which of these are example of error handling technique? तो error handling technique कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ जी. Abnormal termination वो error जो कि कंप्यूटर अपने आम से या कोई सिस्टम जनरेट करे जिसमें आपको कोई हाथ ना हो, उसे हम एबनॉर्मल टर्मिनेशन कहते हैं. ग्रेसफुल टर्मिनेशन कौन से होते हैं? ग्रेसफुल जो टर्मिनेशन एरर होते हैं, इन अगर वो एरर एबनॉर्मल नहीं है तो सेकेंडली वो ग्रेसफुल ही होगा. अब इसमें ऐसा होता है कि वेस्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है और प्रोग्राम खुद से चेक इन स्टार्ट कर देता है आपका. फिर रिटर्न द इलीगल, वो जो आपके पास गलत जिस चीज़ पे एरर आ रहा है वो आपको आगे रिटर्न कर देगा. इसका ऑप्शन होगा जी ऑल ऑफ द गिवन. डैश फॉलो ट्राई ब्लॉक टू कैच द ऑब्जेक्ट थ्रोन. क्या चीज़ कैच करेगी जी? कैच ब्लॉक. लेकिन थ्रोन है, यहाँ पे थ्रो आ गया, फिर यहाँ पे मेन आ गया, नन ऑफ द गिवन, बट इज अ कैच ब्लॉक. 333 पेज पे है. Graphical representation of the classes and object is called object model. It shows its a graphical representation of a class. अब क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और ऑब्जेक्ट्स की कर रहा है, तो वो क्या शो करेगा? ऑब्जेक्ट मॉडल. वो बताएगा कि क्लासेस का नाम क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसका रिलेशन क्या है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास के साथ. Destructor can be overloaded. Is it true or is it false? Destructor cannot be overloaded, so it's a false. Which one of the following term must relate to polymorphism? अब polymorphism के साथ कौन सी term relate करेगी? तो dynamic binding. Which of the following causes runtime binding? दोबारा से repeat आ गया जी. Declaring overridden method as a
non-virtual. Which of the following is the best approach if it's required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on a different data type? That is template. ये हमारे पास दोबारा repeat आया था. Which of the following is best approach to implement generic algorithm with minimum number of coding lines? That is template. Like template function, a class template may not handle all the types successfully. It's a true, it's a false, it's a true. A class template may inherit from another class template. It's a true. Assume a class job. दोबारा से रिपीट आ गया जी. अब हम इस तरह करते हैं कि रिपीट्स को दोबारा नहीं चलते, हम रिपीट को दोबारा रीचेक नहीं करते. तो चले जी आगे चलते हैं. Each try block can have dash number of catch block. कितने हो सकते हैं जी try block में? 1, 2, 3 and as many as necessary. तो याद रखें मल्टीपल कैच ब्लॉक होते हैं जब तक हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक प्रोड्यूस नहीं हो जाता. तो हम कह सकते हैं जी एज मैनी एज नेसेसरी. फिर हमें क्लास का एक कोड बताया गया जी. क्लास डॉक एलिमेंट पब्लिक किया गया, विचुअल वॉइड प्रिंट किया, सी आउट किया, जेनेरिक एलिमेंट कर दिया, क्लास हेडिंग कर दिया, अपने पब्लिक डॉक एलिमेंट कर दिया. ये सारा आपने प्रोसीजर देख लिया. तो इसके बाद हमसे क्वेश्चन किया गया कि सही आंसर व्हाट विल बी द इन दैट लाइन. मतलब व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम इट विल प्रिंट आउट a single line to console output. What will be that time? Select one correct option. हमें ऑप्शन में क्या दिया गया था? जेनेरिक एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, नथिंग विल बी प्रिंटेड. तो याद रखिए नथिंग विल बी प्रिंटेड. Suppose we have two derived classes from a single class. Can we write method with same name in both these derived classes? Choose the best option. Only if the two classes have the same name. हम कब लिख सकते हैं जी same name? जब दोनों classes के अंदर same name होगा. When a virtual function is called by referencing a specific object by name and using the dot member selection operator, the reference is resolved at a compile time. That is false. The function invocation resolve at a compile time. अब देखते हैं जी compile time में जो होता है ना वो dot member selection operator the reference is resolved. reference resolve नहीं होता बल्कि invocation is resolved होती है. Considering the resolution order in which compilers search for function in a program, the first priority is given to the क्या होगा जी ordinary function. दोबारा से हमारे पास रिपीट में आ गया जी. अगेन रिपीट है आपका क्वेश्चन. वन पर्पज ऑफ एन इटरेशन ये भी हमारे पास रिपीट आ गया है. Algorithm can only be implemented using str container false. In Dash, a base class can be replaced by its derived class. In subtyping, this pointer does not point to current object of any class. Is it true or a false? A false. A false क्यों है? क्योंकि ये जो pointer होता है this pointer is hidden pointer. ये hidden होता है हर class member के अंदर. यानी कि this pointer is a hidden pointer inside every class member function. The point to that class object the member function is working with. Which of the following operator takes one or no argument if it reloaded? कौन सा हो सकता है जी? प्लस प्लस. Which of the following operation cannot be overloaded? Scope of resolution operator. The type that is used to declare a reference of pointer is called a static type. मैं चेक नहीं किया था ये रिपीट चल रहा था आपका. Which of these are example of error handling? दोबारा से रिपीट आ गया आपके पास. Dash is relationship. Inheritance is a relationship. फिर जी हमारे पास रिपीट में आया. हम रिपीट को नहीं कर रहे थे. Virtual function allow you to use the same function call to execute member function of object from different classes. दोबारा से हमारे पास रिपीट में आ रहे थे तो ऐसी वीडियो बड़ी हो जाएगी.
हम वीडियो को लेंथ ही नहीं कर रहे तो सीधे सीधा हम लोग जो उस एमसीक्यूज पे चल रहे हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक अगर पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। टेम्पलेट फंक्शंस यूज डैश द ऑर्डिनरी फंक्शन। दोबारा से रिपीट आ गया जी, लेसर मेमोरी। The find algorithm take iteration as its first two arguments. The copy algorithm return an iterator to the element 1 past the element last copied, the last element copied to. If you define a vector with a default constructor and define another vector w with the one argument constructor to a size of 11 and insert 3 elements into each of these vectors with push back, then the size member function will return dash for v. क्या करेगा जी? v for 3 कर देगा v को and dash for w और 11 कर देगा w को, क्योंकि हमने साइज देखे थे वन आर्गूमेंट का और इसका। उसके बाद जी हमारे पास है विच इज़ नॉट द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। फैसिलिटेटिंग क्लास लाइब्रेरीज की एडवांटेजेस होते हैं इनहेरिटेंस के। अवॉइडिंग द री राइटिंग कोड भी हो जाएगा और मेंटेनेंस भी हो जाएगी, यानी कि प्रोवाइडिंग अ यूजफुल कंसेप्शन फ्रेमवर्क। तो क्या हो गया जी? प्रोवाइडिंग क्लास ग्रोथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ये इसका पार्ट नहीं है। दोबारा से हमारे पास ये रिपीट में आ गया था जी, नथिंग वाज प्रिंटेड। Which type of inheritance is being represented by the following statement? कौन सी इनहेरिटेंस बताएगी? देखें इसमें दो है ना, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बताएगी। When we write a class template, दोबारा से हमारे पास रिपीट आ गया जी, क्लास टी। अब ये टी क्यों बता रहे हैं? ओके ये वही है। Here T can be replaced with any name but is preferable. Function template should be used where code and behavior must be identical. Is it true? With one of the following, ये दोबारा से हमारे पास रिपीट में आ गया है। The specialization pattern T star after the name says that the specialization is to be used for every pointer type. A range is often supplied to an algorithm by 2 dash value iterations. गाइस जब आपका पेपर हो जाए तो काइंडली मुझे मेल करके बता दीजिएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि मैं जब दोबारा फाइल बनाऊं तो मेरे पास वो क्वेश्चन हों। Which of the following is an integral part of an object? All of the given. Considering the following statement. Aggregation. अब स्टेटमेंट क्या थी जी आपके पास? Cupboard has a book. What is the relationship between cupboard and books? तो एग्रीगेशन इसका होगा जी। Which sentence clearly define an object? One instance of a class. Dash. Which mean if A declares B as its friend, it does not mean that A can access private data of B. It only means that B can access all data of A. Friendship is one way only. ये इसका आंसर है जी। देखिए आपसे पूछ जा रहा है कि अगर A डिक्लेयर करेगा B को अपने दोस्त की तरह, तो इसका ये मतलब तो ना हुआ ना कि हम A क्लास को एक्सेस कर पाएंगे बाय द प्राइवेट डेटा ऑफ बी। इसका सिंपल ये मतलब होगा कि बी जो है वो एक्सेस करेगा ऑल डेटा टाइप ऑफ ए। क्यों करेगा? क्या रिलेशन है? तो फ्रेंडशिप इज वन वे ओनली, यानी कि सिर्फ बी कर सकता है ना, ए तो इसको कुछ भी नहीं कर सकता। देखें ए जो होता है ना वो नहीं करेगा एक्सेस बी के मेंबर्स को, बट जो बी है वो फौरन से एक्सेस करेगा ए को। तो ये वन वे होता है फ्रेंडशिप का। इसके बाद है द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बी विल कॉज अ कंपाइलर एरर इफ द ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। इट्स अ फॉल्स। अब हम ऊपर जा रहे हैं, रुकें। ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। अब चले जी आगे हम चलते हैं जी। कंसिडरिंग द कॉल गिवन बिलो of overloaded operator plus to any of the two objects randomly. If a class D has been derived using protected inheritance from class B, then public and protected member of B accessed by member function and friend of class D and class derived from D can be. ये दोबारा हमारे पास रिपीट में आ गया था, ये भी हमारे पास रिपीट में है।
in each try block can have, ये repeat में आ गया है. Function template should be used where the code and behavior must be identical. This is true. ये दोबारा मेरे पास repeat में आ रहा था. Identify the correct way of declaring an object of user defined template class, say of char. Type members a char object. The user must define the operation of the copy constructor. Is it true? Again repeat था. The type that is used to declare a reference or pointer is called its static type. ये भी repeat ही भी चल रहा था. How the information hidden within an object can be accessed. अब ऑपरेशन जो हिडन होती है वो प्राइवेट मेंबर के थ्रू एक्सेस की जा सकती है. जो सब ऑब्जेक्ट होता है लाइफ का जिस पे या सब ऑब्जेक्ट्स लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास इन एग्रीगेशन. Encapsulation mean data and behavior are tightly coupled with an entity. एल्गोरिथम ये दोबारा मेरे पास रिपीट में आ गया है. ये भी रिपीट में आया हुआ है. STL container cannot be used to compile C++ program. Dash which mean ये दोबारा हमारा आ गया है repeat में. Which of the following may not be integral part of an object protected data member. If class D has derived protected, ये भी हमारे पास repeat में आ रहा है. What is true about function template? Compiler generate a copy of function respect to each data type. हम रिपीट को नहीं कर रहे क्योंकि फिर टाइम नहीं है. बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होती जा रही है. When the base class and derived class have member function with the same name, you must be more specific with function you want to call using operator overloading. A template provides a convenient way to make a family of function and classes. What is true about the function template? Function template क्या true है? The compiler generate a copy of function respective to each data type. ये हमारे पास repeat में था. अच्छा ये template class vector char. This is an example of partial specialization. Is it true or false? Is it true? A non-virtual member function is defined in a base class and overridden in a derived class. If that function is called through a base class pointer to a derived class object, the object या the derived function या derived class version is used. It's a false. ये दोबारा हमारे पास repeat में आ गया. ये भी हमारे पास. If there is a pointer p to object of base class, basically ये तो है तो repeat but में तो changes कर दी गई कि कह रहे हैं कि एक pointer है जिसका नाम p इन्होंने दिया. उन्होंने कहा कि एक object का base class है वो address contain करती है derived class का. अब जो दोनों classes हैं ना वो non virtual membership हैं. एक और इन्होंने बताया कि ding non member function को ding के नाम से declare कर दिया. Then the statement p ding will cause the version of ding in the dash class to be executed. तो किस क्लास में वो जाएगा? वो बेस में जाएगा. When the base class and derived class have a member function with the same name, you must be more specific with the function you want to call using operator overloading. Non-template friend functions of a class are friends of all instances of the class. The find algorithm. ये दोबारा से हमारे पास आ गया है जी रिपीट में. ये भी रिपीट में आया हुआ है. Which of the following may be integral part of object protected data member? ये थी जी आपकी वीडियो. When a virtual function is called by reference a specific object by name using the dot number selection operator, the reference is resolved at compile time. It's a false. वही रिपीट में हमारे पास था. मैंने इसलिए कहा था कि अब ज़्यादातर हमारे पास रिपीट में ही चल रहे हैं. तो गाइस आप लोग देख रहे हैं 2009 का पेपर जो है वो सारा रिपीट में आ रहा है. कंसिडर क्लास नेम व्हीकल. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंस्टेंस ऑफ क्लास व्हीकल. व्हीकल के क्या क्या होंगे जी? फर्स्ट हो गया कार, दूसरा फिफ्थ हो गया बाइसाइकिल एंड सिक्स हो गया ट्रक. फिर हमें कोड दिया गया. When a variable is defined as a static in a class, then all objects of this class have same copy of the variable. The life of sub-object is depend on the life of master class in composition. इसके बाद हमारे पास है जी दोबारा से ये रिपीट में आ रहा था. It's again repeat.
Multiple inheritance can be type of all of the given. गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बट प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी लाइक नहीं करता, सुन सारे लेते हो, सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता। When a subclass specifies an alternative definition for an attribute or a method of its superclass, it is dash the definition in the superclass. It is a definition of overriding. It is sometimes useful to specify a class from which no object will have been created. Is true. इसके बाद ही हमारे पास है, a pointer to base class can point the object of derived class to a copy constructor is invoked when an argument is passed by value. When the base class and derived class have a member function with the same name, you must be more specific which function you want to call using operator overloading. The mechanism of selecting function at a runtime according to the nature of a calling object is called none of the given option. An abstract class is useful when we do not want to initiate its objects. दोबारा से हमारे पास repetition चल रही है जी. Which of one of the following function return the total number of elements in a vector that is size? Suppose you create uninitialize a vector as follow. ये vector हमने initialize किया तो क्या होगा? ये दोबारा हमारा repeat में आ गया था. The main function of scope resolution operator is to link the definition of identifier to its declaration. When is constructor called? During the instantiation of a new object. Consider the code below. Class Fred, public Fred, int main, Fred at 10, Fred P is equal to new Fred. Select the best option. Fred A 10 class calls the default constructor 10 times. Associatively या associativity can be changed in operator overloading. It's a false. A normal C++ operator that acts in a special way on newly defined data type is said to be overloaded. And which operator cannot be overloaded? कौन सा operator नहीं होता? Conditional. ये हमारे पास दोबारा से repeat चल रहा है जी. Public method of a base class can dash be accessed in its derived class directly. तो ये था जी आपके लिए वीडियो. ये आपकी थी MCQ रिलेटेड वीडियो थी ऑब्जेक्टिव टाइप. होप सो आपको समझ आई होगी. जो चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट कर पूछ लीजिएगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.